Good morning. Right now I am preparing for my breakfast और मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ सैंडविच। और I think I'm finding the chaat masala. Okay, the struggle you can see, guys. Finally, yes, we have the butter knife. आपको चीज डालूं? And then this is the cheese. Oh my god, ये मेरा वाला सैंडविच है, the second one. Sandwich was too yummy. Okay, now let's start the video. This was an old frame जो हमारे घर में लगी थी, and I don't know, the poster was in a very good condition, but the frame ख़राब हो गई थी पूरी, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे एक न्यू लुक दूँ. Now you can see this is how I shoot. ये किस तरीके से सेटअप किया है मैंने. और ये सेलो टेप, it's cost me around 60 rupees. The chart paper cost me around 20 rupees. So this is how I will take the measurement. This is, and take the extra part. Okay, itna. Yes, I will take this much of extra part from all the four corners. This is how I am taking the measurement. I am taking this measurement of like 5 centimeter, and I will cut 4 pieces for 4 borders. अभी मैं इस सेलो टेप से आई विल कवर दैट चार्ट पेपर टाइप, ताकि वो एक तरीके से सिक्योर्ड हो जाए, ताकि कभी भी कोई धूल लगे या हम कभी भी कोई साफ़ सफाई करें तो वो गीला ना हो.
तो मैंने उस चार्ट पेपर को सेलो टेप से सील कर दिया है एंड नाउ आई एम जस्ट प्रेसिंग द कॉर्नर्स टू गिव इट अ प्रॉपर लुक ऑफ अ फ्रेम एंड आई एम जस्ट कटिंग द बॉर्डर्स उसे अच्छे से स्टिक करने के लिए। या अभी मैंने ये सेकंड लेयर सेलो टेप की लगा दिया है एंड नाउ द फाइनल लुक गाइस, आई एम सो हैप्पी, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मतलब एक ओल्ड पेंटिंग थी, मैंने उसे कितना सुंदर लुक दिया है। जस्ट लुक एट द बॉर्डर्स, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक फटी हुई पेंटिंग थी। इट इज़ एक्चुअली अ गुड लक पेंटिंग एंड आई होप कि इट ब्रिंग्स good luck to me, and for that please guys do subscribe to my channel, and if you like the video please hit the like button. Thank you so much for watching.